Hello, how are you? Good morning. Good morning. Hi, good to see you. Makrand, Jitendra, Rahul, Suman, Kamlesh Mehta, Kartikeyan, Kiran, Mamta, Mandip, Nitin, Piyush, Prashant, Pragnesh, Pushpanjali. Hi, good morning, everyone. Chalo. So we will move into the today is first, second, the third part. Okay, the third part of what we have been discussing in terms of market movements and corrections and so on. So today we are going to get into the science of downside. The science of downside. ठीक है ना? So now, what is this science of downside? How many of you ऐसा जब मार्केट्स गिरता है ना, जब मार्केट्स गिरता है, मे बी इट हैज़ फॉलन बाय 10%, 15%, 20%. हाउ मेनी ऑफ यू हैड ए क्लाइंट कॉल यू अप ड्यूरिंग ए फॉलिंग मार्केट, नॉट टू चेक कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि बाजार क्यों गिर रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, सीधा फ़ोन करके बोला कि रिडीम एवरीथिंग. व्हाट हैपन्स इफ आई रिडीम एवरीथिंग? Does it happen with you? How many of you have gone through this? That during a falling market, a client calls you up not to check why the market is falling, but to communicate to you कि please redeem everything, or what if I redeem everything? All right. Okay. Write yes or your experiences in the chat box, all of you. Okay. Thanks, Kartikeyan. Okay. Okay. देखो, most of you, or maybe all of you, most of you or maybe all of you, जब ये situations होता है ना, there's big drops in the market and people panic at times. It's not that, don't just think about what is happening during this war time. War time में तो people do read it in the newspapers, televisions, and so on. And this time, very few people might have actually panicked. Okay, because overall, but it has definitely has occurred in the past. देखो, ये सब situation जो होता है ना, portfolio is never bad. It's not that people are looking to redeem because of portfolio. In most cases, portfolios are still absolutely perfect. Okay, and over time, markets recover होता है, NAVs recover, funds start to perform, but by that time, clients have already left and gone. They exited at the worst possible time, and the portfolio might have recovered, but by that time the client is already gone. And today's session is exactly about that. देखो, our industry spends 90% of our time talking about returns. कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया, 18%, 20%, 22%, 14%, which category has outperformed, which SIP has delivered the highest level of XIRR and all that. Okay. Nobody talks about the other side, which is the downside. Not just कि market गिर गया. I'm talking about the actual science behind why portfolios fail and why do clients panic. Why even the well constructed portfolios sometimes can destroy wealth. Because आप जब portfolios construct करते हो clients के लिए, obviously you do it with the right intent. Correct? अब सब रिसर्च करने के बाद you go through multiple portfolios, you go through the client's goal, try to figure out उनके मन में के अंदर डर क्या है, रिस्क एपिटाइट क्या है, कब पैसा चाहिए, सब कुछ करने के बाद आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो. एंड देन यू सी दैट समटाइम्स द क्लाइंट इज डिसअपॉइंटेड, एंड आप भी डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, बिकॉज आप देखते हो कि जिसमें आपने पैसा निवेश किया, दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज मच, दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज वेल कंपेयर टू अदर्स. व्हाई डज इट हैपन?
एंड देन उसके बाद क्लाइंट्स के साथ बातचीत डाउनहिल पे चला जाता है, आप उनको अवॉइड करते हो, क्लाइंट्स भी घबरा जाते हैं, पैनिक करते हैं, गुस्सा करते हैं, ओके। एंड इवन ए वेल इंटेंडेड पोर्टफोलियो, वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो कैन डिस्ट्रॉय वेल्थ, नॉट बिकॉज ऑफ बैड सिलेक्शन but because of some maybe a bad structure or a bad timing or a bad sequencing. Today I'm going to walk you through 5 concepts, and these are not just basic concepts, these are little deeper. तो कुछ लोगों के लिए शायद ये ऑलरेडी आप लोगों को समझ होगा, but I'm going to share today is the science behind this downside, okay, so that you can understand why two portfolios with the same return can give opposite results. Two portfolios with the same return can give opposite results. And why does a 30% fall doesn't need 30% to recover, it actually needs 43%. And why your client's risk tolerance is actually useless. Your risk tolerance is actually useless until the market actually falls. Okay, and sometimes a group of funds, a 4-5 funds in a portfolio can behave like one fund in a portfolio. मैंने सारे diversification करने के बावजूद भी it is just behaving as if there is no diversification. Okay, all right, ready? शुरू करें? चलिए, let me pull up my presentation deck and I'm going to get started. Just a second. The science of downside दिख रहा है स्लाइड डेक? Visible? It's visible to all? Okay. देखो, when the market goes up ना, NAVs are going up, appreciation is happening, it actually creates wealth, but that wealth is on paper. Okay, जब मार्केट गिरना चालू होता है ना, उस समय पता चलता है कि whether the wealth is going to actually get locked, whether it will actually survive in our real life. So एक होता है the illusion of averages. Okay, देखो, what is illusion of averages? हम लोग CAGR, XIRR ये सब कैलकुलेट करते हैं, ओके। नाउ एंड वी फिगर आउट कि कौन सा फंड 18% रिटर्न दिया, 16% रिटर्न दिया, ओके, एंड 14% रिटर्न दिया. ऑल ऑफ दिस नंबर्स ना आर एक्चुअली यूजलेस. यू नो व्हाई इट इज यूजलेस? बिकॉज ये जो 18%, 16%, 14%, 22%, these are all averages, average return, and these returns will only accrue, ये आपको तभी मिलेगा when that investor has infinite patience, okay. And real world में ना there is so much of volatility which is not getting captured, hence most of the time the clients fail to achieve those results. देखो, past performance क्या बोलता है कि ये फंड ने 12%, 14% रिटर्न दिया है, ओके। नाउ ये जो मूवमेंट देखिए, सो पोर्टफोलियो ए, हाँ, 10% रिटर्न, 12%, फिर नीचे गया 8%, फिर ऊपर गया एंड ऑल ऑफ दैट. सो ओवरऑल उसने 10% के करीब, 10-11% के करीब रिटर्न दिया. बट जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स की बारी आती है, ओके, ये तो हमने पास्ट परफॉर्मेंस देखा, ओके. बट द थिंग इज दिस, when the actual investments होता है, when the client actually invest in that particular portfolio, looking at past performance or looking at the previous path of return, okay, sometimes it can happen that investments करने के बाद तुरंत अगला 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक बाजार गिरता गया, okay,
And जैसे गिरा, then the client becomes anxious, starts getting worried, becomes angry, and then there is always a chance that the person takes a decision to leave the fund. Okay, and it goes to that low level that उसके बाद वो ब्रीच हो जाता है कि उनका बिहेवियर बोलता है नहीं मेरा इतना रिस्क टॉलरेंस नहीं है. ओके, so this is level 1. Whether as a wealth advisor we are able to hold on to that client, make that client hold on to that journey during the worst of the times is a real test. Second, जब बाजार गिरता है, suppose the market falls by 10%, this is just simple maths, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथ्स. बाजार 10% गिरता है, उसी लेवल पे वापस आने के लिए बाजार को एटलीस्ट 11.1% से चढ़ना पड़ेगा. करेक्ट, बिकॉज 100 से 10% गिरेगा तो 90 पे होगा. 90 से अगर 100 वापस जाना है तो 10 रुपये बढ़ना है. सो 10/90 इज 11.1%. बाजार 20% गिरता है तो वहाँ से उसको 25 चढ़ना है. 30% गिरता है तो वहाँ से उसको 42.9% गिरना है. अगर बाजार 50% गिर गया है तो बाजार को डबल जाना है फॉर इट टू इवन रिकवर. So the second science is that the fall and recovery are never symmetrical. You will always notice that the recovery always takes longer. Falling market is always sharper. बाजार 20% गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है, बट 20% चढ़ने में बहुत समय जाता है. Okay, downside protection isn't a defensive thing. Okay. It is the mathematics of compounding and all of that. So that extra percent or down, it's actually a burden on the future returns. कि ये जो गिर रहा है ना 30%, इसको 30% को रिकवर कराने में लंबा समय चाहिए, बिकॉज उसको 42.9% चढ़ना है. नाउ ये जो बिहेवियरल ब्रीच होता है, ओके, बाजार गिरते 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 ब्रीच हो जाता है. ओके, देखो एक वोलेटाइल पोर्टफोलियो, it's absolutely fine if the client stays invested. उसमें कोई तकलीफ नहीं है. ओके, a volatile portfolio is fine if the client stays invested, but a safe low volatility portfolio is actually dangerous if it creates a false sense of comfort. Okay, देखो ये जो extra at a certain point in time that behavior of the client gets breached. The true measure of the risk is that exact percentage drop at which the investor breaks discipline. बाजार वोलेटाइल है, क्लाइंट इन्वेस्टेड है, कोई टेंशन नहीं है, रिकवर होगा, रिटर्न्स आएंगे. बट एट ए पॉइंट इन टाइम द ब्रीच हैपेंस, द क्लाइंट लूजेस ऑल कॉन्फिडेंस, एंड वहीं पे पैनिक रिडेम्पशन, SIP स्टॉपेज एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस. थर्ड, देखो ये जो कोरिलेशन करते हैं ना, हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं. व्हाई डू वी डाइवर्सिफाई? बिकॉज वी डोंट वांट टू पुट ऑल आवर एग्स इन द सेम बास्केट. एक ही फंड में नहीं निवेश करना है. वी पुट मल्टीपल फंड्स. लार्ज कैप में 2 फंड्स, मिड कैप में 2 फंड्स, स्मॉल कैप में 2-3 फंड्स, एक एक करके ये सब करते हैं. नाउ नो, इफ देर इज ए कोरिलेशन of approximately, let's say 0.4, okay, sometimes when the market starts to fall, suppose एक liquidity के कारण बाजार गिरता है, so moment there is one factor which is leading to a fall in all this kind of funds, whether it's mid cap, small cap, flexi cap, then this correlation starts to increase. Okay, it is not that these macro parameters will have different impact on different kinds of funds. लार्ज कैप में भी वो उतना इफेक्ट करेगा जितना वो मिड कैप पे करेगा और जितना वो स्मॉल कैप पे करेगा. ओके, रिमेंबर, जितना भी हम डाइवर्सिफिकेशन करें, ऑल ऑफ दैट डिसअपियर्स ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस एंड इट डजंट कम बैक टू प्रोटेक्ट. सो बियॉन्ड ए पॉइंट इन टाइम, बियॉन्ड ए लेवल इन टाइम, डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली डजंट वर्क ड्यूरिंग डाउन साइड. Okay, then comes sequencing. What is this sequencing? जब हम लोग accumulation phase होता है ना, okay, जब हम लोग यूनिट्स एक्वायर कर रहे हैं, उस टाइम बाजार गिर रहा है तो यू आर गेटिंग मोर यूनिट्स
It is very painful, but it is still absorbable. Are you getting it? जब हम लोग इनिशियल डेज पे इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं, एस आई पीज कर रहे हैं, एस डब्ल्यू पी फेज में, एस आई पी फेज में, तो इट इज़ ऑल राइट इफ द मार्केट इज फॉलिंग ड्यूरिंग द टाइम. देखो वो पेनफुल होता है बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू सी द मार्केट फॉल आफ्टर यू इन्वेस्ट. एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी मार्केट्स गोइंग हायर एंड हायर. ये जो हम लोग बोलते हैं ना एक्स्ट्रा यूनिट्स मिलेगा, इट इज़ प्रैक्टिकली करेक्ट, थियोरेटिकली करेक्ट, बट बिहेवियरली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब. बट ये जो विड्रॉल फेज में, ओके, इट इज़ वेरी पेनफुल. ये एक डॉक्टर वाडे है, वाडे, इनके बहुत सारे वीडियोस आप देखना चाहो तो देख सकते हो यूट्यूब पे. तो वो क्या बोलते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट्स का जो एक्सपीरियंस है इन द फर्स्ट 10 years will determine what is the final investment that you end up doing, and 3/4 of your final retirement outcome is determined by the experience of your investment in the first 10 years. It's beautiful. उनका आप वीडियोस देख सकते हैं. Okay. Then, so what are the things, 5 things or 4 things that we have to look at? On paper, there can be wealth when markets are going up. In the real world, the sequence of returns are very important. पहले क्या आ रहा है? I am getting plus 10% return in the first year, plus 10% return in the second year, and then minus 5% return in the third year. It's all right. But if I get minus 10% return in the first year and then followed by 20% return in the second year, it is a problem. Okay. Then the definition of risk is the behavioral breach. किस level पे behavior breach होता है? Okay. Third, crisis correlation. Most of the fund starts to behave in a correlated manner during moments of crisis. Nobody can say कि जब war होगा, the correlation will continue to be intact. Sorry. Remember, the downside protection is not a defensive tactic to save money. It is something that we have to be very careful and offensive about in order to save the investors from themselves. Okay, because as you go higher and higher, levels of deeper into this world of wealth management as a science, it is more a science of psychology and behavior than a science of money. So if you can manage those points of survival, okay, and master the recovery mathematics, correlation dynamics, that is when your clients will start to make the biggest amount of money. All the best, everyone. Have a great day ahead, and see you tomorrow exactly at 10:10 in the 4th and the final part series on this behavioral maths about market declines. All the best. See you tomorrow.